Hello and welcome friends to our channel Knowledge Track. Friends, today's video is going to focus on a very important question which is there in investors' mind. And that important question is, since Nifty has already crossed 15,000 levels and these are the new highs which we are seeing in the market today, what should a retail investor do? Whether he should stay invested in the market and wait patiently for another 4 to 5 years to get the returns, or should he exit the market right now because market has already given so much returns to the investors that they already must be sitting at around 25-30% of what they have invested in the market. So this question is very important. So let's try to understand this with the help of a very important ratio, which is generally used when we try to look at or gauge the market in terms of its valuation. So this ratio is PE ratio. तो मार्केट की वैल्यूएशन को जब भी देखा जाता है तो पीई रेशियो से हम उसे देखते हैं. अब ये पीई रेशियो क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं. पीई रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हमें बताती है कि मार्केट की वैल्यूएशन कैसी है. पी रेशियो शेयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है. इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स की अगर आप वैल्यूएशन देखना चाहते हैं उसके लिए भी पी रेशियो यूज कर सकते हैं. एंड सिमिलरली पी रेशियो कैन बी यूज टू चेक द वैल्यूएशन ऑफ द ओवरऑल इंडेक्स जो कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स है. अगर हम आज की डेट में निफ्टी 50 का पीई रेशियो देखें, सो दिस पीई रेशियो इज समवेयर बिटवीन 37 to 41. और ये जो 37 to 41 का रेशियो है, दिस इज ऑलरेडी इनटू द रेड जोन. इनटू द रेड जोन का मतलब है कि आज निफ्टी का जो वैल्यूएशन है दैट इज फेयरली हाई. तो मार्केट लुक्स ओवर वैल्यूड. What does this mean for a retail investor? एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट की वैल्यूएशन हाई है. दैट मीन्स दैट देयर इज अ रिस्क which is attached today. Market may come down going forward. If the situation continues, if this particular situation continues, all those factors which are actually supporting the market to sustain these levels, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो particular supporting factors हैं, ये कौन से supporting factors हैं, why the markets are moving up. This is very important to understand. All over the globe, we know COVID pandemic is already there, and it's been more than a year now that we are sitting into this situation. And within this situation, market has touched the new highs. What's the reason? तो इसके 2-3 important reasons हैं. सबसे पहला reason है stimulus package which every government is giving. Another important factor is investors की maturity. More investors have come into the market. Retail investors ने और पैसा मार्केट में लगाया है. ट्रेडिंग जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है ओवर दिस entire 1 year. And there is another factor also which is investors जो कि foreign investors हैं. A lot of foreign investors have come and they have invested their money into the markets. Globally interest rates के कट होने से, ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो इंटरेस्ट रेट्स के कट होने से आज की डेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है, बिकॉज the interest rates are low, so that's why they are investing more money into the Indian markets. So that is another reason that the markets have already crossed certain levels. तो इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स और पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एक हाई रेंज की तरफ चल रही है. But how long it can sustain these ranges, this is something which is unpredictable. There is an uncertainty attached to it. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर रिटेल इन्वेस्टर के माइंडसेट को समझा जाए या फिर हम लोग अपनी बात करें, फॉर एग्जांपल मी एंड यू हु आर रिटेल इन्वेस्टर्स, व्हाट आइडियली वी शुड डू. हमें लगता है कि लेट्स एग्जिट फ्रॉम द मार्केट बिकॉज वॉट एवर गेन्स वी हैव मेड, इफ मार्केट कम्स डाउन दीज गेन्स विल बी वाइप्ड आउट. Point number 1. Point number 2 is we also feel that if we exit from the market right now and market starts moving towards the higher direction, that is it starts moving beyond 15,500 levels, we might miss that bus of growth. So there is another important point which we are considering right now. तो ये दोनों factors हमारे दिमाग में, they are creating a kind of dilemma that what should ideally be done in a situation like this.